हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पास पेपर्स ऑफ बीएस इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन अप्रैल 2022 जो कि लेटेस्ट है। सो मॉर्निंग आफ्टरनून दोनों का डिस्कस कर लूँगा। सो लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। दो क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1, realism is the dominant theory of international relation. Give your argument to prove the authenticity of this statement. Obviously realism most dominant theory है international relation के अंदर, क्योंकि ये practical theory है, reality of politics बताता है। ये सब कुछ आपने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। पार्ट ए, चौक पॉइंट्स इन द इंडो पैसिफिक के अंदर जो भी चौक पॉइंट आते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस। और पार्ट बी आ जाता है जी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू इनको एक्सप्लेन करना है। बैलेंस ऑफ पावर, जियोपॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर एंड लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। and this is social linguistics. Question number 1, write a short note on following topics. social linguistics और तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम टॉपिक्स मैंने अपने चैनल में कवर किए हुए। रजिस्टर को डिस्कस करना है, पिजन को, बोरोविंग को और क्रियोल को। और क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड डायलेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डायलेक्ट। डायलेक्ट के टाइप्स आपने डिस्क्राइब करने हैं, राइट, रीजनल, सोशल और जो भी आते हैं। एंड देन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 1, इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अलोंग विद द सुटेबल एग्जांपल्स के थ्रू आपने इनको इलुस्ट्रेट करना है, डिस्क्राइब करना है। इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ अ क्रिटिक, डिक्शन, एंड विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी एंड there may be without character said by Aristotle। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लाटो एंड एरिस्टोटल ऑन सर फिलिप सिडनी's essay An Apology for Poetry fortifies a considerable argument defending poetry. What is your opinion? Explain with arguments। ऑब्वियसली सिडनी के ऐसे अपोलॉजी फॉर पोइट्री में आपको प्लाटो का भी इन्फ्लुएंस नज़र आएगा, एरिस्टोटल का भी इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। सो कौन कौन से टेक्स्ट में आपको इन्फ्लुएंस कहाँ पे नज़र आता है, टेक्स्ट का रेफरेंस देख के आपने बताना है, राइट। फिर इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 1, describe the key environmental indicators that help us to identify how human activities are affecting our environment। और पार्ट बी है जी, what is the importance of soil and how does it change with changing climate and physical features। क्वेश्चन नंबर 2, explain the major aspect of soil degradation और ecosystem component and processes को आपने डिस्क्राइब करना है। फिर पेपर आ जाता है जी, इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश, राइट, पाकिस्तानी लिटरेचर का। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, द मैग्नीट्यूड, ambit and savagery of which compels one to search for larger meaning of events and come to terms with the lethal energies that set off such vast conflagrations। Explain the statement with reference to Ice Candy Man by Babsi Sidhwa। So obviously theme of partition को मैं वीडियो में डिस्कस कर लिया है, राइट। सो आप वो देख सकते हैं आइडिया लेने के लिए। सो ऑब्वियसली दिस इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ पार्टीशन के कौन से ट्रैजिक इफेक्ट्स थे आपने वो डिस्क्राइब करने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी, द हार्ट डिवाइडेड बाय मुमताज शाहनवाज encompasses the theme of androgyny, feminism leading to feministic discourse and fragmentation of self and evolution of identities आपने डिस्क्राइब करना है। एंड मॉर्निंग के पेपर्स आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग का सोशल लिंग्विस्टिक का पेपर है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंस बिटवीन सोशल लिंग्विस्टिक एंड सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। फिर एलाबरेट भी करना है, मल्टी फॉल्ट कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी विद अप्रोप्रिएट इंस्टेंसेस विद द स्कोप ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक। और क्वेश्चन 2 है जी, व्हाट इज लैंग्वेज वैरायटी, व्हाट इज सोशल रीजनल डायलेक्ट एंड
Draw distinction between the both by providing proper examples from English and Pakistani languages, यानी उर्दू में से। Environmental studies का पेपर है जी, why does energy content decreases at each level of food chain? Describe the relation between the GPP and NPP in ecosystem productivity. Part B है जी, why is an understanding biogeochemical cycle important in environmental science? Explain with one example. Question 2 है जी, explain करना है part A, how climate and physical features can change soil fertility, how environment support life on this planet. फिर IR का है जी, क्वेश्चन नंबर 1, realism and liberalism are two mainstream theories of IR. So in your opinion, which theory can provide the most insight into the past and present international relation and why? So रियलिज्म के रिलेटेड आफ्टरनून में भी क्वेश्चन था, यहाँ पे भी है. सो ऑब्वियसली रियलिज्म इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल थ्योरी इन IR, जो कि पॉलिटिक्स की रियलिटी को बता देता है. राइट, सो नोट यहाँ पे दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ग्रेट डिबेट एंड इवोल्यूशन ऑफ IR एंड बैलेंस ऑफ पावर को आपने उसके ऊपर नोट लिखना. Literary criticism and theory. Question number 1, what are the possibilities for plot according to Aristotle and what kinds does he find tragic and why? ठीक है, एरिस्टोटल का प्लॉट के बारे में क्या कहना था एंड कौन से काइंड ऑफ प्लॉट को वो ट्रेजिक कहते हैं, राइट, एंड क्यों. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, हाउ डिड ट्रेजेडी इमर्ज एज अ आर्ट फॉर्म. और क्वेश्चन 2 है जी, why did Plato banish poets from his ideal state? Explain reference to the Republic. So ideal state से क्यों निकाला था? Obviously उनकी करप्ट पोइट्री की वजह से निकाला था. करप्ट पोइट्री, रिमेंबर, नॉट ओनली पोइट्री बट करप्ट पोइट्री. सो पाकिस्तानी लिटरेचर का है जी. क्वेश्चन नंबर 1 है, the heart divided is only a major response to the events which created the two states of Pakistan and India and therefore political novel of 1947. Theme may be said to be renunciation of the idea of Hindu-Muslim unity and acceptance of the idea of creating a separate state for Muslims का पाकिस्तान elucidate करना है आपने. और क्वेश्चन 2 है जी, डिस्कस आइस कैंडी मैन एज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. सो दिस इज़ ऑल. आई विल प्रोवाइड यू द PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.